ठीक है। वेलकम द न्यू our GSPrime mentees, Lisa, Pawan. Welcome. Redmi, I don't know you are a new user or someone else. Okay. Pawan, you understand Hindi or English? Which language you prefer? Anything is fine, but I can understand Hindi. Yeah, Hindi you understand. Great. I can understand Hindi. Yeah. We also know English actually, but Hindi में अलग मजा आता है actually ये. ठीक है? हाँ सर. Okay, sure. Okay. Anybody else here who don't know Hindi? Okay. तो वो सीख लेगा थोड़ा हिंदी क्या? Okay, no problem. Okay, हर्ष. हाँ सर, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, 6 सेकंड. सेंड करिए आप जल्दी से, जल्दी करिए. व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? हाँ. Right. Very few of them have written I am in. Okay, तो उनका क्या I am in लिखने के लिए नेहा गुप्ता ने नहीं लिखा I am in. क्यों? You are not in, Neha Gupta? No sir, I am writing this now. So wait. Time is money actually, not for me also, Yes, for yes. you. Right. Yeah. आपका राइटिंग बहुत अच्छा है. एफडीडी में आपने लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली. बहुत छोटा टाइम तो कम था, झटपट नोट बना रहा था इसलिए. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. व्हाट इज द 6 स्टेप्स इन एफडीडी? कहाँ पढ़े हर्षित नंगाली? आप वीडियो ऑन कर लीजिए अपना. हाँ, तो वो बफर कर दिया पागल. बफर कर रहा है, दिखाइए फिर भी. हाँ ठीक है, ठीक चल रहा है अभी. व्हाट आर द 6 स्टेप्स इन एफडीडी? तो the 6 steps in वीडियो ऑन बंद कर FDD are दीजिए, चलेगा. firstly, वीडियो बंद करके आप बोलिए, ठीक है? चलेगा. हाँ. वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है तो. Firstly, I will calculate the adjusted EBITDA of the company. Next, I will calculate the net debt position of the company, and in the third step, I will compute the normalized working म्यूट कर लीजिए capital अपने आप को प्लीज. on the basis. हाँ. On the basis of these 3 computations, I will now analyze it and try to find out the key drivers of revenue and other primary key indicators which signifies how the company will be operating in the future. जब बोल रहा है ना तो अपना थोड़ा माइक को ऊपर करिएगा, क्योंकि आपका ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है. वीडियो से ज्यादा ऑडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो हाँ, तो उसको थोड़ा जोर से बोलिएगा या तो वो रखिएगा, ठीक है? फिर से बोलिएगा एक बार. व्हाट आर द 6 स्टेप्स इन एफडीडी? Sir, in the first step, I will compute the adjusted EBITDA of the company. Okay. Next, I will compute the net debt position of the company, and third, I will compute the normalized working capital of the company. On the basis of these 3 computations, I will calculate the key parameters which help in the growth of revenue of the company and other operating expenses. On the basis of these computations, I will figure out the key financial ratios that will help the company to grow. These are the steps that will help me to analyze the financial position of the company. एक्चुअली आप गलत बोले हैं. 6 स्टेप्स इन एफडीडी होगा. एनालाइज द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, प्री एनालिसिस ऑफ द केसेस, चेक द डॉक्यूमेंट्स, फुल एनालिसिस ऑफ द केस, रिस्क एनालिसिस. फिर आपने क्या लिखा है? फाइंड, ऑफरिंग एंड क्रिएशन. आप ही लिखा है, हमने लिखा है. हाँ. ठीक है. What do you understand by the quality of earnings? The quality of earnings is the company's sustainable earnings. That is, in quality of earnings, we do certain adjustments, such as excluding non-recurring incomes and expenses, any discretionary expenses, so as to figure out नोट्स what बनाइए are आप लोग. नोट्स गीता नहीं चल रहा है, नोट्स बनाइए. नोट्स so as to compute the sustainable earnings of the company. ठीक है. Okay, what are the 3 important deliverables in FDD? The 3 important deliverables in FDD are adjusted EBITDA. क्वेश्चंस लिखिए सब जन, आंसर आप लोग खुद खोजेंगे, ठीक है? Normalized working capital. What are the 3 important deliverables in FDD? Adjusted EBITDA, net debt position, and normalized working capital. फिर से बोलिएगा. Adjusted EBITDA, net debt position, and normalized working capital. What is normalized working capital? Normalized working capital is the working capital is the
is the capital that a company needs to run its day-to-day operations. So in normalized working capital, we do certain adjustments so as to figure out how exactly the company will be able to carry its day-to-day operations. What is enterprise value? Enterprise value is the value जो of the वीडियो अभी ऑन company. नहीं कर रहा ना, वो लोग को नेक्स्ट सेशन आ नहीं पाएगा, इनके अभी सेशन, इसलिए वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। जो नहीं किया हमको याद है, रिकॉर्डेड हो रहा है, वीडियो ऑन करिए। इनका भी सेशन 1:30 बजे, इसलिए हम नहीं बोल रहे कुछ। बोलिए जल्दी जल्दी। व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू? Enterprise value is the valuation of the company. लास्ट में सारा that क्वेश्चन the value, पूछेंगे आप लोगों को, लास्ट में पूछेंगे क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस किया, नहीं बता पाए गया, खेला खत्म आपका, कैंसल। बोलिए, व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू? enterprise value is the value that the company will be able to provide. That is, the formula is the market capitalization plus outstanding loans and advances, outstanding debt plus minority interest minus cash and cash equivalent. Good. What is operating and financial leverage? Operating leverage is the calculation which depicts how the company will be able to cover its fixed cost and able to earn that much revenue so that it's able to generate profits. So the formula of operating leverage is change in EBIT by change in sales. If the purchases are increasing suddenly, what are the reasons? If the purchases are increasing, firstly, I will analyze the key driver for purchases. So in purchases, there can be a change in quantity or a change in price. There can also be another reason that if sales are increasing, then purchases are increasing. For the purpose of quantity or price, there can be reasons due to seasonal changes, such as during winter season, a particular commodity might be priced higher than during the summer season. So seasonal changes is also to be considered. Why you want to switch your profile to FDD from audit? As an auditor, statutory auditor, my job was to get an assurance that the financial statements depict a true and fair view. But in financial due diligence, I will get an opportunity to dive deeper into the financial statements and analyze the financial position of the company. I will also be able to understand how the business operates and the key parameters of the industry, on the basis of which we can say that a company's performance is good or bad. In it, I will also be able to analyze the financial statements so as to compute the adjusted EBITDA, net debt position, etc., which involves number crunching and is not based on standards of auditing or any particular law, which has to be done on a repetitive basis. This is why FDD attracts me. And even I would also like to mention that, like, recently I was reading an article that in Go Mechanic, a startup, recently EY conducted its financial due diligence, after which Go Mechanic had to lay off 70% of its workforce, because after EY conducted its financial due diligence, it was found out that Go Mechanic had inflated revenue and fake garages, because of which Sequoia Capital and Tiger Global, such investors are now saying that they invested in the wrong investors. आप जब लंबा आंसर नहीं बोलेगा, जब आपको पूछ रहे हैं ना, ये होता है जनरली जब आप नर्वस होता है ना, व्हेन यू आर नर्वस, आप लंबा बोलने लग जाता है आंसर। तो जब आपको पूछा जाएगा तो आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर देने का कोशिश करेगा। जब भी इंटरव्यू होगा तो बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, ये जनरल होता है, बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस आप लंबा आंसर बोलता है। तो कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड बोलना है, ठीक है? ठीक है, समझ गए ना? हाँ। 1.5 minutes, 2 minutes, more than enough. Okay. Well, how was your past working experience post CA and in articleship? So in articleship, I started my articleship journey from NST and Associates, and also did for a period of 1 year in Grant Thornton. And I have experience in multiple industries such as logistics, cold chain warehousing, manufacturing, and NBFC. And post qualification, what you have done? So post qualification experience I don't have, because currently I'm not working anywhere. Okay. Well, after CA, you don't have any experience? No, I cleared my CA recently in November 22. Okay. What is DSO? So DSO is a daily sales outstanding, which helps us to figure in how many days the sales made will be converted back into cash. So the formula for daily sales outstanding is
accounts receivable, average accounts receivable divided by net sales into 365 days. Okay. What are the sales audit procedures? For auditing and revenue, first we ask the client for the ledger dump and analyze the sales that has been made during the year. On the basis of selected samples, then we start first by analyzing the sales agreement and checking if subsequent receipt for sales has been made or not. In auditing the sales, main 6 assertions that needs to be checked, that is occurrence, classification, cutoff, accuracy, and completeness. Why the financial due diligence is carried out? So, for an example, like currently Shark Tank series are going on. So I will just take an example of Shark Tank. So in there, what happens is that pitchers come and pitch their figures. For example, they say that month-on-month growth is this, the sale revenue is this, last year revenue was X. And the investors based on that pitch invest. But before investing, they want an assurance that okay, the figures that were pitched by the pitchers are accurate and not inflated. So that is why financial due diligence conducted before transaction, such as in investing transaction or any buy or sell transaction. What is the difference between TAS and FDD? So TAS is basically is like an umbrella within which FDD falls. Any service taken, for example, for before transaction or after transaction is covered under transaction advisory services. Under this umbrella, there are multiple sectors such as mergers and acquisition, financial due diligence, valuation, etc. How will you manage the long working hours in FDD? So I already have experience of doing my articleship in Grant Thornton, and over there, daily, usually we work around 14 to 13 hours. So since I already have that experience, so I know what I'm getting into, and I know I can handle that kind of work pressure. What is the difference between NPV and IRR? So IRR is called the internal rate of return. It is the rate at which the outflow that we are doing today becomes equal to the inflow that we'll earn in the future. And NPV is called the net present value. That is when we discount the future cash flows at a decided rate and calculate the present value. And if this present value is more than the initial investment, then that is called as positive NPV. While calculating the WACC, what weights should we use? Market value or book value? We should use market value as it depicts a more accurate picture for calculating WACC. What is P ratio? P ratio is price to earnings ratio, which is calculated by dividing market price to earnings per share. What does it depict? It depicts how much money I have to pay in the market to be able to earn one revenue earnings. What drives the P ratio of the company? The P ratio, P ratio of the company is driven by its profit after tax and the demand of its shares in the market. Do you invest in stock market? Yes, I have invested, but I usually invest in mutual funds. Any sector that you invested? So I've invested in technology sector and hospital sector. Seeing the current COVID trends and the growth in the hospitality sector, I had a feeling that hospital sector is going to grow in the future. What are the key risks in the hospitality sector? The key risk in the hospital sector is the risk of bad image. For example, if a testing center has given a wrong test results, and if it results in a wrong operation, so this is something that bad image is a good image is main for a testing center, because if the goodwill is there, then only I will go and give my test results to them. Which companies do you think will grow in the hospitality sector? For example, I think Fortis will grow in the hospital sector. Okay, and another sector you said is telecommunication, right?
telecommunication. Technology sector you said. Technology. What is the key risk in this technology sector? The key risk in technology sector is being up to date, since technology changes every day. If the company which is in the technology sector is not updating itself, like for example, I have experience in warehousing industry, and in warehousing industry now they are using AR and using, for example, Chat GPT, that is an AI. So such AI tools are also being used in logistics sector to accurately be able to measure how much quantities space is left in the warehouse and other details. So if the company is not being up to date with the technology, then there is a risk of obsolescence. When you analyze the revenue, okay, when you analyze the revenue of you said a technology sector, okay, what are the things that you will be analyzing in this? So in technology sector, so as to analyze their revenue, first I will have to understand their customer base. For example, if I'm analyzing Apple, then I know that they have a premium customer base segment. For example, on the other hand, if I'm analyzing Xiaomi, I know that they have a price sensitive customer base. So customer base is important. Second, the goodwill of the company is also important. So these two are something that are coming right now in my mind. Right. As a manager, what would you endeavor by looking at the firm's working capital? So working capital depends from company to company and its requirements. In airline sector, for example, negative working capital is appreciated, but in a manufacturing company, negative working capital might not be appreciated. So I have to analyze the company to know what kind of working capital requirements are there. Right. What is your expected CTC out here? So my expected CTC is as per industry standard, what is given to a CA fresher. What is the industry standard? So as per my knowledge, the industry standard is ranging anywhere from 10 to 12 lakhs. But for me currently, I value this profile much more than the salary expectation. Okay. What is your long-term goal after 5 years? So after 5 years, I would definitely like to be part of the major deals that are being cracked in financial due diligence. So for example, like recently there was a merger deal between HDFC and HDFC Bank. So like these are the transactions that excite me, and I want to be a part of these transactions. Why do you think we should hire you? So during my articleship, I had depicted my good working skills, and I had good team spirit. I've also been the city leader of an NGO that is present all over India. So I have the people managing skills as well. The two skills that I value the most are observational skills and listening skills. And I feel that with these skills, I will be able to manage my team and be a good team player. Do you have any questions for us? Yes, so I would like to know, like, what kind of, after joining the company, what kind of clients that I can expect working in, which sector I can expect working in. That will tell you after joining. You're not selected yet, right? Okay. Yeah, so that's it from me then. Right. We will tell you after the session. And in 2 weeks time, okay, our HR will come back to you and tell you about everything. Okay. Thank you so much for attending. I'll give you the feedback after this session. Thank you. Okay. ठीक है, ठीक है, तुम्हारा ठीक था, तुम थोड़ा बहुत अपना नॉलेज और इम्प्रूव करो, मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है, जाओ पढ़ने लग जाओ बाबा। हाँ ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया मंगला, हाँ जी प्रिया मंगला, हाँ जी प्रिया मंगला, आवाज आ रहा है आपको प्रिया मंगला? इनका ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रिया मंगला, इनका ना प्रॉब्लम यही रहता है, यही चीज हमको समझ में नहीं आता है, बाद में बोलेंगे कि हम डांटते हैं सेशन के बाद।
अटेंटिव नहीं है। Vivo V222129 ये कौन है? Vivo V21219 who is this? New customer. Vivo name? सर श्वेता, एक्चुअली मैं एडिट करना भूल गई थी नाम। कौन सा ओके श्वेता श्वेता अग्रवाल नहीं, सिन्हा। नो श्वेता सिन्हा। नो हाँ हाँ श्वेता नाम करिए बिकॉज हम लोग को टेंशन हो जाता है ना। नहीं, एक्चुअली मैं वो जल्दी जल्दी में मैं एडिट वो करना मैंने पहले किया था। मैं ये 11:30 तो बजे नाम फिर लिखा दोबारा से। करिए, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई के नहीं, वो मेरे बनमास को है भी दे ध्यान। दिया अपना, चल तू भी कर लेता है, सेशन लिंक दे दिया तो कभी लिखा करेंगे ठीक है ना। श्वेता, हाँ जी है सर, ना, वो मेरे को ध्यान। ठीक है, वही चीज है ना। ओके अभी कर लीजिए, नाम चेंज करिए। चलिए प्रिया मंगला गार्गी अग्रवाल गार्गी अग्रवाल गार्गी अग्रवाल। Yes, 3 बार sir. में नहीं बोलेंगे तो हाँ बोल दिए। चलिए दिव्या, वीडियो ऑन करिए सब जन, ठीक है। तो क्या क्या क्वेश्चन डिस्कस हुआ? प्रिया मंगला का नहीं आ रहा है, गया। प्रिया मंगला का गया। खानी से सबका आपके लिए बस आज के दिन ही है। सोना मिश्रा एंड सोना मिश्रा गया। 2 Yes, आदमी sir. आउट आ गए हैं। Yes, sir. संभावनी बोरा एंड संभावी है ना आपका नाम, बोरा गए, सर, उसका इनका गया, क्लास चल रहा है। लेट हो गया। और अटेंटिव नहीं है। प्रिया मंगला एकदम अटेंटिव नहीं है। गार्गी अग्रवाल ठीक है, एक बार बोल दी थी बच गई। निविदा 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 देखो फास्ट हो गया थोड़ा ना। तो फास्ट हो गया। निविदा निविदा निविदा। तो पता चल गया कौन कौन अटेंटिव नहीं है ना, ऐसे करके पता चल जाता है हम लोग को, ठीक है। प्रिया मंगला नहीं है, निविदा नहीं है, राइट। उनका नाम हम नोट कर लेते हैं। देखिए सेशन का झाट खाएगा तो हमको मत बोलिएगा। निविदा और क्या नाम है, प्रिया मंगला। और आप सेशन के बाद क्या बोलोगे कि मेरा भी रिलायंस का वो था, क्या बोलते हैं, आइडिया का नेटवर्क था, दैट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है ठीक है। चलिए आप लोग क्या क्या पढ़ाई कर लिया अभी तक, किसको पकड़े पहले स्टार्टिंग में? पहले तो न्यू मेंबर्स को वो कर लेते हैं, जो न्यू मेंबर आया। एक आया कौन सा, पवन पवन बंडी ना। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, पवन बंडी। हाउ यू फीलिंग? या sir. So you're saying something? yes, give your introduction, your first question na. I'm Pawan. I'm from Hyderabad. I've done my schooling and college in Andhra. I've done later. I've joined CA course. Now I've done my articleship in Hyderabad, NSVR and Co LLP. And then I've done articleship in the domains of stat audit, internal audit, and restatements basically. इतना सीरियस होके क्यों बोल रहे हैं? हम तो recently ऐसे qualified. कैजुअली पूछे थे आपको, कैजुअली पूछे थे। समथिंग कैजुअली पूछे थे, इंट्रोडक्शन वाला सेशन था। आप तो पूरा सीरियस होके बोल रहे हैं। चलिए मैंने सोचा इंटरव्यू के क्वेश्चन है। नहीं, इंटरव्यू का क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही पूछे थे आपके बारे में, ठीक है। और व्हाट आर आवर हॉबीज? I play cricket and badminton in leisure times. Other than that, I watch movies regularly. ग्रेट, ठीक है। चलिए आप लोग का होमवर्क क्या क्या कर लिया आप लोग ने? नोट्स आपने बनाया थोड़ा बहुत? क्या क्या नोट्स बनाया, क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस हुआ था बताइए। सर एक्चुअली आई हैव अ डाउट, पूछना है, मे बी सबको आया होगा। सर वो जब कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म फिल कर रहे थे ना, तो उसमें सिटी दे आर आस्किंग अबाउट, तो हाउ मच शुड बी कोट सीटीसी? सीटीसी कम दिखाइए एकदम। कितना मतलब उसमें उन्होंने, मैंने अभी मतलब बस फिल करके छोड़ दिया है, फिर मैंने कहा एक बार आपसे कम कंफर्म दिखाइए, करके देन सब। 8 लाख 1 लाख 8 लाख। ओके। 8 से ज्यादा मत दिखाइएगा। 8 ठीक है, वो ज्यादा फिल्टर में नहीं आएगा फिर कंपनी सब आपका। 8 लाख कैंपस। और कोई डाउट कैंपस रिलेटेड फॉर्म का?
बोलिए। सर उसमें डिक्लेरेशन जो फाइल करनी है लास्ट में जाके ओके वो उसमें बोल रहा है कि जो मेन 22 वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए डिक्लेरेशन दिखा रहा है बेसिकली वो हु कैन अपीयर फॉर द कैंपस डिक्लेरेशन क्लास में आती है सर कैंपस फॉर्म में उसमें दे रखा है जो बच्चे मे 22 वाले अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं उनके लिए है ये समझ में नहीं आया इनका क्वेश्चन, आप लोग आ गए समझ में? किसी ने फॉर्म भरा ही नहीं इसका मतलब, इन्होंने भरा है क्या? बोलिए बोलिए, हेल्प कर दीजिए इनको। सूर्यांश, एक चीज आप इम्प्रूव सर करिएगा एक्चुअली आरके ये अग्रवाल, इशू घर में लाइट लगा लीजिए थोड़ा सा, लाइट दिखता ही नहीं, आपका चेहरे नहीं दिखते। अच्छा ये सब ओके चीज मैं इम्प्रूव करने दूसरे का रूम चीज में है। बैठी हूँ एक्चुअली हाँ, लाइट वाइट बहुत जरूरी होता है, अंधेरा अंधेरा लग रहा ओके है, ऐसे आप करिए, ये सब चीज अभी से इम्प्रूव अच्छा करिए। प्रिया मंगला, ठीक है आवाज आ रही है आपको? यस सर। आपको 3 बार 4 बार बुलाया है, 6 बार, देखिए सब जन सुना है, आप बोलेगा ना हमने नहीं सुना, क्या हो गया था? तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, मैंने अभी फोन में चालू करा दोबारा। लैपटॉप हैंग हो गया था आपका? ठीक है, हाँ जी, कोई बात वैसे नॉर्मल चल रहा था, वीडियो चालू करती ही हैंग हो गया। क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था बताइए तो, क्या क्या क्वेश्चंस अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, क्या क्या क्वेश्चन था बोलिए? अभी हम लोग किए थे ना थोड़ी देर पहले, क्या क्या क्वेश्चन था वो? यू हैव आस्क्ड अबाउट द एफडीडीज। वो तो बताइए सबको, क्या क्वेश्चन क्या था उसमें? मैंने इतना सुना नहीं था क्योंकि बीच में ज्वाइनिंग ही हुई थी मेरी, इसलिए। किसने सुना था? मैं नहीं सुना तो सब ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, मनीष मातो, बोलिए। सर इतने सारे क्वेश्चन थे कैसे याद होंगे? हाँ हाँ, इतने सारे क्वेश्चन थे कैसे याद रहेंगे? नोट्स बनाने बोले थे ना, नोट्स, किसी ने नोट्स नहीं बनाया? भागवत ये गीता तो चल रहा सुना था, बताइए कौन बनाया नोट्स, बताइए बनाया है कौन मैंने बनाया भी नोट्स? देखा है जो बनाया वो बनाया हमारा है फेवरेट स्टूडेंट हो गया, बताइए कौन कौन बनाया, जल्दी जल्दी लगा देंगे नौकरी। पवन बनाया, सर मैं चलिए। निशा अग्रवाल, गुड गुड, ठीक है, जो सर बनाया, मैंने चलिए। निशा अग्रवाल बताइए क्या क्या क्वेश्चन था? The 6 जो नहीं steps बनाया of गया उसका बस, FDD. 1 ईयर तक गया आपका, अब Sir, तो नहीं गया है। बोलिए क्या क्या क्वेश्चन था? the six steps of FDD. Then enterprise value. राइट, Then what if purchase suddenly increases? Then what are the reasons behind it? Then हाँ relating to the P ratio, what is P ratio? What impact does it has? And सब नोट what किए are the आपने? 3 kinds नोट्स of बनाए आपने? नोट्स deliverables? बनाया? हाँ सर, शेयर करिए, हाँ ग्रुप सर, में कुछ शेयर कुछ कर दीजिए, क्वेश्चंस लिखे हैं। ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फोटो खींचिए, ग्रुप सर में शेयर मैंने, कर दीजिए, ठीक है सर, ग्रुप में कर शेयर दे कर रही हूँ। दीजिए, जो जो बनाया ना ग्रुप में शेयर करिए, दूसरों को भी हेल्प करिए, है ना? चलिए, पवन ठीक है आपका जो क्वेश्चन था ना गार्गी अग्रवाल, क्या क्वेश्चन था वो एक बार बोलिए तो, सूर्यांश उसका जवाब देगा। आप समझ गया क्वेश्चन इनका क्या था? डिक्लेरेशन का कुछ था, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रही थी ये? सर वो लास्ट में जो डिक्लेरेशन आ रही है कैंपस फॉर्म में उसमें लिखा हुआ है आई हैव क्लियर्ड इन सीनियर फाइनल्स इन मे 22 ऐसा वाला डिक्लेरेशन आ रही है कुछ क्या होगा उसका सूर्यांश? सर एक्चुअली ये इशू मैंने भी फेस किया था, बट है ना उसको लेकर के मैंने इंस्टीट्यूट में मेल ड्रॉप कर दिया था, हेल्पलाइन जो ओके, मेल आईडी था वहां से फिर रिप्लाई आया था कि इट विल बी रेक्टिफाइड इन 1 or 2 days। एक्चुअली द डिक्लेरेशन वो जो था वो पुराने अटेम्प्ट का था, सो इट हैज बीन रेक्टिफाइड नाउ। तो मैंने कल ही चेक किया था तो वहाँ पे November 22 अभी दिखा रहे थे। आप लोग जब बोलता है ना तो माइक लगा के बोलिए, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रहा है, अब बाकी को भी सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे भी लोग को सुनने का मन नहीं रहता है, और ये सब बहाना और मिल जाता है, बात समझ आ रहा है ना? ये सब चीज तो थोड़ा माइक है ना, ये सब जरूरी भी है, जब आपको इंटरव्यू में बोलेगा कुड यू प्लीज रिपीट, कुड यू प्लीज रिपीट, तो आपका हो जाएगा। देखिए इंटरव्यू में ना 3 चीज जरूरी होता है, एक तो टेक्निकल नॉलेज, दूसरा आपका वीडियो का बैकग्राउंड, जो कि आप ये कारीगर का पूरा अंधेरा होकर रखा है, जैसे सूर्यांश बहुत अच्छा से बैठा है अभी, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ऐसे करके बैठना है, पर हाँ थोड़ा कोट कोट पहन के वो अलग बात है, ठीक है? और ड्रेसिंग सेंस का, पीछे का बैकग्राउंड, और ऑडियो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुंह से अगर उसको बार बार बोलना पड़ेगा आई नॉट एबल टू हियर यू, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, तो प्रॉब्लम है। जोर से बोलिए, स्विफ्ट बोलिए, इसलिए वो लगा लीजिए, क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरा मेरा आवाज अच्छा से आता है ना? Earphone. मेरा आवाज अच्छा से आ रहा है? Yes, अच्छा से आ रहा है ना? हम लोग ये सब यूट्यूब कर करके ना पूरा वो कर लिए, पूरा
कि आवाज को लेके कभी लफड़ा नहीं हो। पहले बहुत वो किए थे, आवाज नहीं आता है, इसलिए। और वो कुछ लगाते भी नहीं है, मतलब होता है ना, ईयरफोन लगाने का दरकार नहीं पड़ता है। आवाज पूरा आता है ना मेरा? कम बेसी आता है तो एकदम अच्छा से आता है ना? Yes, sir. सुनाई का वही चीज, तो Yes. आवाज एकदम अच्छा से आना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, ठीक है। तो अभी आपको डाउट सॉल्व हो गया ना? आप लोग कैंपस का फॉर्म सब भर दिया? एवरीबडी हैज फिल्ड द कैंपस फॉर्म, कि कोई वेट कर रहा है Yes, लास्ट sir. डेट का? हु हैज No, नॉट sir. फिल्ड द कैंपस फॉर्म? व्हाट इज द Sir, लास्ट no. डेट? सर मैंने नहीं भरा। व्हाट इज द लास्ट आज डेट? भरे। व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट क्या है पता है आप लोग को? 31st है सर। January. 31 जनवरी। तो लास्ट डेट ही पड़ेगी क्या? नहीं आज भर देंगे सर आज। आज भर दीजिए एकदम ये सब चीज। देखिए अगर कैंपस में नहीं लगा ना तो फिर गया, फिर कुछ नहीं हो सकता है। ऑफ कैंपस में कुछ नहीं है, बाद में आके सब मारामारी होता है बाद में जाके बहुत। फिर कैंपस में आईसीआई को बोलेगा कि कर दोगे पहले? हाँ रेज्यूमे रिव्यू कर दोगे एक बार कैंपस फॉर्म भरने से पहले? हाँ हाँ, तो दो, ग्रुप में डालो, फटाफट देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में डाला था डालते उस जाओ, दिन। अभी डालो। सर, पहले कंप्यूटर मेरा भी खोजते थे, मैंने आपको मेल किया था ग्रुप में रेज्यूमे। डाल दो, ठीक है? आप लोग ग्रुप में डाल दो, ये हम ले लेगा फिर। कैंपस सर में रिज्यूम में कैंपस कौन सा में डालेंगे, इंडस्ट्री वाला या पर्टिकुलर हाँ फील्ड? सर यही सब क्वेश्चन कुछ, था। सब कुछ, ऑलराउंडर सीवी डालना है। सब कुछ होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, प्रिया यस मंगला, सर। प्रिया मंगला, Yes, sir. वीडियो ऑन करके रखिए। वीडियो बंद क्यों करते बार बार? हमको देखना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं ऐसा वो कुछ तो नहीं ऐसे है। भी देख रही है हमको, ठीक है। ठीक है, आपका ये टैक्सेशन का अच्छा से हो गया ना? हाँ जी। ठीक है, आपका ये अभी हम लोग 5 मिनट बाद टैक्सेशन का शुरू करेंगे, ठीक है? तक आप लोग को एक बार टैक्सेशन का वो कितना हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग सब हो गया ना आपका? हाँ। बढ़िया, ठीक है। ये वही सेक्शन चल रहा है ना अभी? वेरी गुड। खत्म हो जाएगा। 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट और कुछ बात कर लेते हैं। तो रिज्यूमे वगैरह दीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद आप ये करेंगे। हाँ सर मेरा एक डाउट था कि सर हाँ, जैसे अभी सर हम लोग ग्रुप अपना में डालिए रेज्यूमे रिज्यूमे, फॉरवर्ड कर रहे ग्रुप में हैं। डालिए। हाँ, ग्रुप में डालिए। हाँ सर जैसे सर अभी जैसे सर ऑफ कैंपस में हम लोग अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो सर फिर कैंपस में भी वही कंपनी आएगी तो दिक्कत नहीं होगा ना कि हमने पहले रेज्यूमे भेजा था उसी कंपनी में, फिर हम कैंपस में भी उसी कंपनी में वापस कर रहे हैं तो? फिर से बोलिए डाउट। सर जैसे कि अभी सर जैसे मैंने अपना रेज्यूमे भेजा है पीडब्ल्यूसी में और हाँ सर टाटा स्टील में, और सर फिर कैंपस में भी बाई चांस अगर वही सब कंपनी वापस से आ गई तो सर दिक्कत नहीं होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगा ना? नहीं क्योंकि सर ना अभी सर, उन्होंने पूछा था प्रेफरेंस, तो सर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स कर दिया क्योंकि मैंने 3 साल मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स में ही काम किया है। किसमें किया? इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सर कौन सा कंपनी? पीडब्ल्यूसी में। इनडायरेक्ट टैक्स में पता है कितना पीडब्ल्यूसी कंपटीशन होता है? कंपटीशन पता है वो इनडायरेक्ट टैक्स में कितना होता है? पूछ के सर करना मेरे को चाहिए था। समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं, ये सब हमको हाँ पूछ सर। लीजिएगा कंपनी को लेके। जो कंपनी सिलेक्ट करेंगे ना, कंपनी कैसे सिलेक्ट हाँ अभी हो सकता है? हाँ अभी कैसे कंपनी सिलेक्ट हो गया? अभी तो नहीं आया, कंपनी नहीं आया, कैसे सर सिलेक्ट होगी? सेलेक्ट नहीं सर कंपनी सेलेक्ट नहीं सर, लिंक्डइन में एक पीडब्ल्यूसी के सर एक एम्प्लॉय थे, उनका मैसेज आया था कि शेयर योर रेज्यूमे, तो फिर सर मैंने शेयर किया आपसे पूछ के ठीक है, कि आई एम वेटिंग फॉर शेयरिंग। इनडायरेक्ट और टैक्स फिर देखिए सर करेगा, उन्होंने मार्केट बहुत खराब है, इनडायरेक्ट टैक्स का भयंकर नॉलेज चाहिए। ठीक है, अब ये ले लेगा टैक्सेशन का तो ठीक है, वो चीज हो गया। ठीक है, निशा अग्रवाल, बताइए अपने बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपको पहला सेशन है नहीं? बोलिए। इसके बाद हम लोग यस सर, 1 to गुड 1 भी लेगा। आफ्टरनून। ठीक है, जितिन थॉमस आपका हो नहीं पा रहा था कि आप भी बोले थे कि मैरिज में चले गए तो हम क्या करें, बोलिए। हम तो फोन किए थे आपको ना, आप लिखते हैं मैरिज एंड फिर क्या क्या लिखते हैं, हम बोलना नहीं चाहते इधर ना, क्या? ओके सर। ठीक है, कोई बात नहीं है। पर मैरिज वैरिज कम करिए अभी, अभी पढ़ाई, अभी ये टाइम में मैरिज और ये जो जो भी चीज है ना, ये सबको अवॉइड करिए। ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई एम टेलिंग यू एवरीबडी, ओके, दिस 1 month इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, and this 1 month should be invested in campus form, membership number, second thing, and third thing is interview preparation and nothing else. Because if you prepare for interview, यस कॉल तो आ ही जाएगा, कॉल तो आ ही जाएगा। देखिए आपने कितना ही कर्म यस खराब किया हो, कॉल तो आएगा ही आएगा, यू नो दिस, ओके? चाहे आपका कितना ही आपने पाप किया यस हो, कुछ नहीं किया हो, कॉल तो सबका आएगा, यू नो दिस। कॉल तो सबका आने वाला है, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी आएगा,
समझ नहीं आएगा तो बता के रहिएगा सुबह कि भगवान एक कॉल आ जाए, भाई एक कॉल आ जाए, आ जाएगा, कॉल तो आएगा, फिर कॉल आने के बाद क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। कॉल आने के बाद रिजेक्ट नहीं होना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इफ यू गेट रिजेक्टेड देन क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर यू गेट रिजेक्टेड, व्हाट हैपेंस 6 इफ यू महीना गेट का ब्लॉक। 6 महीना तक 6 महीना सीवी या 6 ब्लॉक, महीने 6 महीना सीवी ब्लॉक। तो द बिगेस्ट थिंग इज टू डोंट गेट रिजेक्ट इन द इंटरव्यू। द बिगेस्ट थिंग इज नहीं कॉल आ जाए, कॉल तो सबका आएगा, कॉल सबका आने वाला है 6 महीना के अंदर। इट विल बी आपका वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा अगर आपको कॉल नहीं आता है। आपने बोला था हाइट्स का कुछ नहीं किया कुछ, समझ गए क्या? तो कॉल तो सबका आएगा, डोंट वरी ऑन कॉल्स, ओके? यू शुड वरी ऑन, यू शुड नॉट गेट रिजेक्टेड व्हेन द कॉल कम्स। नहीं एक्चुअली भोजन का क्या होता है ना, मेरे को जब तक 5-6 कॉल नहीं आते तब तक तुमको मजा नहीं आता है। 5 से बाद तो हम रिवाइज करेंगे ना, 5 to 6 टाइम्स आई शुड गेट रिजेक्टेड। तो डोंट बी इन दैट मतलब मूड कि आई शुड गेट 5-6 अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। इवन इन सीए फाइनल आई गॉट सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो हियर आल्सो शुड आई गेट ना। यहाँ पर मत करिएगा सब टाइम बस, समझ रहे ना मेरा बात बोलने का? तो सीए फाइनल में हमने नहीं माना तो यहाँ पर कैसे मान ले? यहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाते हैं 4-5 बार, क्या दिक्कत है? डोंट बी इन दैट मूड। यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या बोलना चाह रहा है कि डोंट टेक दिस एकदम लीलियंटली, ठीक है? निशा अग्रवाल आप आ जाइए सेशन में, ये सेशन हो गया उसके बाद हम लोग जो प्रिया मंगला है जो कि भाग गई है शायद, है इधर में, अब आपका लेके टैक्सेशन का, फिर निशा आ जाइए सेम सेशन में, ठीक है? यस सर। इंपॉर्टेंट चीज बताया एकदम, इंटरव्यू कॉल आ जाए ना तो कोई भी कीमत में इसको क्लियर करना है, चाहे जान जाए या कुछ जाए, बस वो इंटरव्यू क्लियर होना जरूरी है। उसके जान जाए तो कोई ओके सर। दिक्कत नहीं हो, इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए, देखिए